Hello, good evening everyone. Welcome to the online classes of YouTube session. Today we will discuss the area of the triangle and center of the triangle. First, area of the triangle. What is area of the triangle? We all know area means କ୍ଷେତ୍ରଫଳ. ଗୋଟେ triangle ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହବ ସେଟା first ଦେଖିବା. Okay, first coming to the figure. Here, these are the three vertices of the triangle ABC. Vertices means ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ. ABC a triangle ର ତିନିଟା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ where coordinate of A equal to x1 y1, coordinate of B equal to x2 y2, coordinate of C equal to x3 y3. जदि गोटे ट्रायंगल रो तीनटा वर्टेक्स जदि हमकु जणा थिबो तो हमें तार कोन बाहर करि परिबा से ट्रायंगल रो क्षेत्रफल मींस कोन ए ट्रायंगल जहा थिबो ए भीतर रीजन टा केते सेटा हमें बाहर करि परिबा. सो हियर द फार्मूला इज लेट a equal to x1 y1, b equal to x2 y2, c equal to x3 y3 be the vertices of a triangle. Then the area of the triangle ABC is given by half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So by putting the values of x1 y1, x2 y2 and x3 y3 we can get the area of the triangle in this formula. So a formula को मन रखियो केमती एठी हम माने कोन करबा गोटे सर्कल रे ड्रा करबा सेटार तीनटा पॉइंट नबा 1 2 3. सो जेतोल 1 x1 कला को तार कोन प्रोडक्ट करबा y2 minus y3. सो दिस इज x1 हला को ए दिटा y1 हबो तार गोटे डायरेक्शन रे मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे फेडिबा y2 minus y3. जेतेबेले ए पोजीशन को आसीबा एटा x2 हबो तो हम पई y2 कोटा कोटा रहबो y वैल्यू कोटा रहबो ए दिटा रहबो तो सेतेबेले कोन हबो x2 into y3 minus y1 एठी मध्ये से क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे जिबी. सिमिलरली जेतेबेले x रो ए वैल्यू कोन हबो x3 into y1 minus y2 because सेतेबेले ए दिटा वैल्यू बढ़ी आइतिबो ए दिटा पोजीशन सो y1 minus y2. So here you can compare x1 into y2 minus y3. So 1 into 2 minus 3 plus 2 into 3 minus 1. That means x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So this is all about the area of the triangle. So solving one problem, here you can see find the area of the triangle. Find the area of the triangle whose vertices are a equal to 2 3 4, b equal to 5 comma minus 2, c equal to 0 comma 4. So here we have the vertices for a, b and c. So we can write this as x1, this as y1, this is my x2, this is my y2, this is my x3 and this is for y3. So area of the triangle, here the formula is, so I have written the formula first, half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y1 minus y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So half of the value of x1 is minus 3, y2 minus y3, so minus 2 minus 4 plus x2, the value of x2 equal to 5 into y3 minus y1, so 4 minus 4 plus x3 into y1 minus y2, that is equal to 4 minus minus of 2 I have written here. So minus 3 into minus 2 minus 4, that equal to minus 6 plus 5 into 4 minus 4 0 plus 0 into 4 minus of minus 2, that equal to plus 6, that equal to 0 into 6. So half of this is my 18, this is 0 and this is 0. So I have written half of 18, that equal to 9 unit square. Why unit square? As एरिया जेतोला हम लिखुचे कोन बाहर छु हमर से तोड़ either cm square or meter square ए टाइप किछि लागुची सेति पय यूनिट जहा हिथिबो ता माने ए बी रो लेंथ जहा हिथिबो जदि सेटा cm रे हिथिबो तो cm square हबो मीटर रे हिथिले मीटर स्क्वायर हबो सेति पय हम एठी लिखुचे यूनिट स्क्वायर. नोट कोन एठी गोटे नोट अछि एरिया केबे भी नेगेटिव होई परिबो नाही. एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव. सो इफ वी गेट नेगेटिव वैल्यू ता माने एठी देखो एरियाटा मोर एठी कोन आसिला पॉजिटिव आसिला. जदि नेगेटिव आसे ता माने किछि गोटे नेगेटिव वैल्यू लाइक
एठी मु लिखिछि गोटे एग्जांपल दवा पई जदी इफ वी आर गेटिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एज -9/2 यूनिट स्क्वायर तो मु सेठी कोन नेबी ओनली द पॉजिटिव वैल्यू नेबी सो area cannot be negative so area of the triangle will be kete hobo modulus of this quantity modulus means only we will take the positive value so 9/2 unit square. Okay, now we will see the coordinate of centroid. Centroid माने कोन फर्स्ट देखिबो तापरे ताहार कोऑर्डिनेट केमति बाहर करे जिवो सेटा देखिबो. First coming to the figure here also what we are getting first you can see this is a triangle एटा गोटे ट्रायंगल ABC जहार कोऑर्डिनेट A रहुची x1 y1 B रो x2 y2 C रो x3 y3 सो अम्मा माने पूर्व क्लास रो पढिछे मध्यमा माने कोन गोटे शीर्ष बिंदु रु ताहार विपरीत बाहुर मध्य बिंदु को जॉइन करूथबा लाइन को आमे कोन कहबा मध्यमा सो हियर AD इज द मध्यमा बा मध्यमा को इंग्लिश रे कहै जे मीडियन सो एठी देखो BC रो मिड पॉइंट होची D सिमिलरली AC रो मिड पॉइंट होची E AB रो मिड पॉइंट होची F सो AD BE एंड CF आर द मीडियंस बा ओडिया रे कहबा गले मध्यमा ए तीनटा को कहबा मध्यमा द मीडियंस सेंट्रोइड का कहे द पॉइंट वेयर द मीडियंस मीट ता माने कोन सेंट्रोइड होची भर केंद्र ए तीनटा मध्यमा जे पॉइंट रे मीट करंती सेडा कहबा हमें सेंट्रोइड सो एठी हमें कोन कर परिबा D रो फार्मूला बाहरिबो x2 + x3 divided by 2 y2 + y3 divided by 2 as D is the midpoint and we have the coordinate of B as x2 y2 and C as x3 y3 similarly एठी भी जदी बाहर करिबा AB रो midpoint F रो कोऑर्डिनेट कोन हबो x1 + x2 divided by 2 y1 + y2 divided by 2 F रो E रो कोऑर्डिनेट बाहरिबो x1 + x3 divided by 2 y1 + y3 divided by 2 after that आमे जानिचे the centroid बा भर केंद्र A line AD किंबा BE किंबा CF को केते रेशियो रे डिवाइड करे this is 2 and this is 1 so 2:1 रेशियो रे डिवाइड करे सो आमे जदी सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन रो पकेवा फार्मूला पुट करिवा एंड फॉर व्हिच x1 y1 एटा नबा आउ x2 y2 मींस B रो कोऑर्डिनेट जगह रे जदी आमे ए पॉइंट को पुट करिवा देन वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर द centroid and what is that is the coordinate of the centroid will be x1 + x2 + x3 divided by 3 y1 + y2 + y3 divided by 3 so this will be the coordinate for centroid means gote triangle ro भर केंद्र बा centroid ro formula kono this is the formula if we have the points means x1 y1 x2 y2 x3 y3 ता माने a b c रो जदी कोऑर्डिनेट जणा थिबो तो हमें तारो सेंट्रोइड बाहर करि परिबा okay I have written the definition of median and centroid what I have said there okay so coming to the example what you can see the question is find the centroid of the triangle whose vertices are a equal to -1, b equal to 4, 5 and c equal to 3, -2 तो a रो पोजीशन पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते होची -1, b रो 4, 5 and c रो 3, -2 so मो पई x1 y1 के हबो x1 होची -1 y1 हबो 0 x2 y2 x2 4 y2 5 x3 3 y3 -2 so I have written the values for x1 y1 x2 y2 x3 y3 here so by putting in the formula now we can get the value for centroid the value bahar kari pariba ba coordinate bahar kari pariba so the value for centroid equal to x1 + x2 + x3 divided by 3 that means -1 + 4 + 3 divided by 3 y1 + y2 + y3 divided by 3 that equal to 0 + 5 -2 divided by 3 so we are getting what 6/3 and 3/3 that equal to 2, 1 so this is the value for the centroid of this triangle okay thank you